सर्वेश्वर भगवान को आज अब द्वादशी युक्त त्रयोदशी तिथि जसलाई हामी प्रदोष भन्छौँ। प्रदोषको सुन्दर द्वादशी तिथि भगवान विष्णुको, त्रयोदशी तिथि भगवान शङ्करको। आज हरिहरको दिनमा आनन्दसँग 1-2 अध्याय भागवतको पाठ श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि पुरुषोत्तम महात्म्य पाठ श्रवणका साथै कथा हामी सुन्दछौँ र आजको यो उसलाई हामी समापन गरेर फेरि 5-5:30 बजेदेखि हामी बेलुकाको पूजाको तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। आनन्दसँग मनमा भगवान गोविन्दको मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्नु र कानबाट भने पाठलाई श्रवण गर्नुहोला। गफ चाहिँ नगरिदिनु होला। पाठको बिचमा गफ गर्दा ठुलो पाप लाग्दछ। त्यो पापबाट आफू पनि बस्नु होला र अरूलाई पनि बचाउने काम गर्नु होला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचम स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथं मुने गृहे रमतयन्मूल कर्मबद्ध पराभवानूनं मुक्तसङ्गानं तादृशानं द्विजर्षभा गृहे सोऽभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रार्षे उत्तमं श्लोकपादयोः छायानिवृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामति। संशयोऽयं महानुभावब्रह्मान् दारागारसुतादिषु सत्तस्य यत्सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरन्विता। श्रीभगवानुवाच भारमुक्तं भगवता उत्तमश्लोकस्य श्रीमत् चरणारविन्दमकरन्दसरसः आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां संशिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यरिवाह भावः राजन् स राजपुत्र प्रियव्रत परमभागवतो नारदस्य तरणोपसेवयात् सा वः गतपरमार्थसत्त्वतुः ब्रह्मसत्रेण धीशिच्यमाणो वनितलः परिपालक नाथ परवर गुणगणैकान्त भाजनतया स्वपितृपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाप्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारकक्रियाकलापो नैव्याभ्यानन्दध्यभिः तदप्रत्यनां न तव्य तदधिकरणम् आत्मनोऽन्यस्तः दासतोऽपि पराभव मनवीक्षमाणः। अतः भगवानादिदेवः एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यान व्यवसितः सकलजगदभिप्रायः आत्मयोनिरखिलः निगमन् निजगणः परिवेष्टितः शुभवनादवततारः सतत्र तत्र गगनतलः ऊडुपतिरिवः विमानावलिभिरनुपथ ममर परिवृढैरभिपूज्यमान पथिपति च वरुथस सिद्धगन्धर्वध्य
साध्यचारण मुनिगणैरुपगीयमान गन्धमादन द्रोणे मवभासयन् रूप ससर्पः तत्रः येनं देवर्षि हंसयानेन पितरं भगवन्तमिरण्यगर्भम् उपलाभमानः सहस्रीभूत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्ते भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवानेकातितरा मुदितः गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सह सदयाः सा बलौकैति होवाच श्रीभगवानुवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमहर्षं प्रमेयम् वयं भवस्ते ततजीर्षमहर्षिर्वहाम सर्वे विवसा यस्य विदिष्टम् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुःखाय च देहयोगामभ्यर्थदेशं जनतां गदत्ते यद्वाचितन्वां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदा ईशाभिश्रेष्ठं ह्यवरुन्धमेहं सुखं वा गुणकर्मसङ्गादास्ताय तत्तद्ययुक्तनाथ चक्षुष्मतान्त इव नियमानं मुक्तोऽपि तावत् त्रिभिर्यात् स्वदेह मारब्धमस्नन् भीमानशून्य यथानुभूतं प्रतियातनिन्द्र किं त्वन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते भयं प्रमथस्य वनेषु पेशाद् यतः शास्ते सहषट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् षड्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेन पूर्वम् अतीति दुर्गार्जितमूर्जितारिन् क्षीणेषु कामं विचरेद् विपश्चितं त्वं जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गास्मितो निर्जितषड्सपत्ना भुङ्क्षे भोगान् पुरुषादिशिष्टान् विमुक्तसर्ग प्रकृतिं भजस्व श्रीसुतवाच इति